ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार, यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ आर्ष विज्ञान युट्युब च्यानल। म विष्णुदेव यहाँहरू समक्ष आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। अब हामी स्वस्थानीको समय रहेको छ। स्वस्थानीको मूल पाठलाई श्रवण गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई म निवेदन गर्नेछु, मूल पाठ बिना को कथा अधुरो हुन्छ। मूल पाठको महत्त्व अत्यन्तै उच्च रहेको छ, यहाँहरू जान्नुहुन्छ। त्यसैले आउनुहोस् मूल पाठलाई श्रवण गरौँ। त्योभन्दा पूर्व मङ्गलाचरण गरौँ, ध्यान गरौँ। सबैले हातमा पुष्प लिनुहुनेछ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मीततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुष्पलाई अर्पण गरिदिनुहुनेछ र पुनश्च पुष्प लिनुहुनेछ। अब हामी मूल पाठ प्रारम्भ गर्नेछौँ। अथ श्री स्वस्थानी व्रत कथा मूल पाठ प्रारम्भ। कैलास शिखरे रम्ये नाना धातु प्रशोभिते कल्पवृक्षोद्यानयुक्ते कामधेनु विराजिते चिन्तामण्यादि संयुक्ते चाष्ट सिद्धि समन्विते सुखासीनं जगन्नाथं ज्ञानमुद्रायुतं शिवं ब्रह्मेन्द्र विष्णुभिर्वन्द्यं सौम्य रूपधरं शिवं पतिं प्रणम्य शिरसा पृच्छत् पार्वती परमेश्वरी। पार्वती उवाच भक्तवत्सल सर्वज्ञ देवदेव जगत्पते ब्रूहि मे परमेशान व्रतं त्रैलोक्य दुर्लभं को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। सुरासुरस्तथा नागा महाचार्यस्तथा सुराः भ्रातरो विविधा सन्ति तथान्ये विविधा नराः यद्वैदव्यहरं पुण्यं स्वस्थान स्थिति हेतुकं। श्री महादेव उवाच साधु साधु महादेवी यत्त्वयाहं प्रबोधितः संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि वौह्वर्थं व्रतमुत्तमं माघस्य पूर्णिमायन्तु स्वस्थानि व्रतमाचरेत् आवयो पूजयेत् अत्र प्रतिमां मण्डले शुभे चन्दनाक्षत पुष्पादि गृहीत्वा ध्यानम् आचरेत् सुवर्णवर्णदीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलाननां सिंहासनं समासीनां सर्वालङ्कारभूषितां नीलोत्पलाभयां वामे दक्षिणे वरदाभयां खड्गचर्मधरां चोर्ध्वं वाम दक्षिणयो क्रमा चतुर्भुजां च मां तत्र पूजयेद् वृषकेतनं नीलोत्पलाभये वामे वरशूले च दक्षिणे एवं ध्यत्वा महादेवीम् अर्घ्यं चाथ प्रदापयेद् अष्टोत्तरशतैः पुष्पैः फलधूपान्नचन्दनैः पूजयेद् वै महादेवौ जगत परमेश्वरौ। ततो गोधूमचूर्णेन सतिलेन गुणेन च गर्भं कृत्वा तु पत्तव्यं सर्पिषाश्चोत्तरं शतं पूपकं परमेशानि तद्वै भक्त्या निवेदयेत्। ततुष्टपूपं संगृह्य शुक्लवस्त्रेण वेष्टयेत् पीतवस्त्रेण संबध्य पूजयेत् पतिबुद्धिना पत्ये दद्याद् भक्षणार्थं वा दद्यात् मित्रपुत्रयो एतान्न लभते यातु सा नद्यां वाहयेत् मुदा प्रदक्षिणे कृत्य ततः आवां वै श्रद्धयान्विता ब्राह्मणान् भोजयित्वा तु दक्षिणां च प्रदापयेत्। स्वयं शतं तु भोक्तव्यं रात्रौ जागरणं चरेत्। ततो विसर्जनं कृत्वा जले तन्मण्डलं क्षिपेत्। वर्षे वर्षे व्रतं कुर्यात् स्वस्थानी नामकं शुभम् एतद् व्रतफलं देवी संख्यातुं नैव शक्यते। गोशतं सहस्रञ्च परिष्कार विभूषितं कन्यादानन्नदानानां वाजिवारणकोटिश वस्त्ररत्नमहादानं तिलकाञ्चनमेव च राजसूयाश्वमेधाभ्यं यत्फलं समवाप्यते तत्सर्वं समवाप्नोति व्रतेनानेन सुन्दरी। व्रतानां न शिरोरत्नं स्त्रीणां चैव विशेषतः त्रिवर्गं तु समालभ्य प्राप्यते परमागतिः इत्येतत् कथितं देवी किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। पार्वती उवाच तत्कथां श्रोतुमिच्छामि सर्वचेतो रमां शुभां
कथयस्व महादेव यदि योग्यास्ति मे प्रभो। श्रीमहादेव उवाच साधुदेवी तया दत्तं तत्कथा श्रवणे मनः तव प्रीत्यो प्रवक्ष्यामि सावधानतया शृणु। पुरासीद् ब्रह्मपुर्यां वै शिवभट्टो महातप षड्कर्म निरतो विप्र सर्वशास्त्र अर्थपारगः। पूर्वजन्म विपाकेन नालभत् सन्ततिं द्विजः तस्य पत्नी सती नाम्नी नित्यं या पतिदेवता विषण्णा यति दुःखेन पृच्छति ब्राह्मणी पतिम् आजन्म पापिनी काहं न जाने किं मया कृतं पुत्रपुत्री न मे किञ्चित् वृथा जन्म गतं मम। भार्या वचनमाकर्ण्य पतिः स्वस्थ्यं जगादः। एतस्मिन्नन्तरे काले जायः पत्यो किलाग्रतः तयो पुण्यप्रभावेण तत्रैका गौ समागता। गवातयोरग्रतस्तु गोमयं वै ससर्जः समुत्पन्ना ततो हृष्टा कन्या रूपवती शुभा सर्वलक्षण संयुक्ता पत्यन्वंगी कृता च सा। धनधान्यादि सम्पूर्णं लक्ष्मीवत् प्राप्यतां द्विज। चकार शङ्खवाद्यादि मृदङ्गालादमुत्सवं ददौ नाम यथा न्यायं गोमया भट्टिनीति च। अनेक पुण्यकर्माणि श्रद्धया चकारः प्रत्यहं वर्धते कन्या शुक्लपक्षे यथा शशि। तत्पुण्यवर्धर्षिता सर्वे त्रस्ता शक्रादय सुरा कैलासं तु समागम्य सर्वं ज्ञाप्य तत्ततः अभयं च मया दत्तं गच्छ शक्र यथा सुखं। शक्रस्वस्थानम् आयाते मया ज्ञप्तो विचक्षणः तत्कालोऽहं महादेवी बभ्राम भूमिमण्डले कपालिवेशो भिक्षार्थं तद्विजदारमागतः। डमरुं वादयित्वा तु ययाचे विप्रमन्दिरे। एतस्मिन्नन्तरे काले सा कन्या गौरवात् तच्च वाद्यं न शुश्राव कुसुमैः क्रीडति स्थिता। श्रुत्वा माता तु तत्शब्दं शीघ्रं कन्या जगादः। दीयतां तत्करे पुत्री राशिरन्नस्य विद्यते। मातुर्वचनमाकर्ण्य भिक्षां धृत्वा ग्रतोग्रता भिक्षुरूपक्रोधयुक्त शापं तस्यै ददौ तदा। भिक्षुरुवाच तद्भिक्षा नैव गृह्णामि शृणु ब्राह्मण कन्यके अशीति वयसा वृद्धा पतिस्तव भविष्यति इति शापं ततः श्रुत्वा रुरोदातीव विह्वला। धीमति जननी कन्यां सात्वयामास यत्नतः कालेनाल्पेन सा देवी गोमयेद भव सुन्दरी। गोमयेति स विख्याता भवत् 10 वार्षिकी। पतिं योग्यतरं तस्य गतो मार्गयितुं पिता द्विजोजामा त्रियोग्यो हि न प्राप्त शिवभट्ट स विश्रांत स्वगृहं प्राप्य शिवभट्ट सुदुःखितः। भिक्षुकस्य तु शापेन दैवेन प्रतिपादित। ब्राह्मणोऽतीव वृद्धस्य कन्यां याचितुमागत। जटालम्बित दीर्घांग कंपितश्चाति दुर्बल कुब्ज कुबेशो बुधिर पश्चिमे वयसि स्थिता। अन्य द्विजस्य लाभेन तस्य शाप भयेन च पूर्वशापं सा अनुस्मृत्य तस्मै दुहितरं ददौ। कन्यादानं चकाराशो शुभलग्ने शुभे दिने ततस्तु शिवभट्टेन पालितो दुहितुपति। कालेन ज्वरपीडार्थो शिवभट्टो दिवं ययौ। तत्पत्नी पतिना सार्धं सतीत्वं समागता। गोमया चाति दुःखार्ता पतिना सहतिष्ठति। क्लेशयुतातिमलिना भोक्तुं पातुं न विन्दति। तस्यां तु गर्भसञ्जातो हर्षशोक विवर्धन। सीमन्तो नयनं कृत्वा विप्रपुंसवनादिकम्। एवम् आमासावधिं कृत्वा भिक्षार्थं वृद्धब्राह्मण पत्नी प्रबोधयित्वा तु ततो देशान्तरं गता। शीतज्वरपीडार्थो ममारण्यके द्विजः गोमया ब्राह्मणी सा च निर्जने निजमन्दिरे स्थित्वा ग्राम्यजने नैव पालिता पतिदेवता। गोमया 10मे मासि शुशुभे तनयं शुभं द्विजस्य तस्य नाम्ना नवराजेति कीर्तितं। याचितान्येन सा माता कारयामास सप्तमे चूडाव्रत विवाहादि सर्वकर्माणि तस्य वै। यौवनोद्भेद वयसि नवराजो द्विजोत्तम वसनगृहेति दुःखेन संयुक्तो मातृवत्सल। मातरं परिप्रपच्छ षोडशाब्दोति साहसी भोम्बततोस्ति क्व गत सत्यं कथय मां वृषा इति पुत्रवच श्रुत्वा सा माता रुदति सती जगाद वचनं पुत्र भर्तुश्चरितसंयुतं त्वयि गर्भस्थिते पुत्र तातस्ते वीक्षितुं गतः क्व तिष्ठति न जानामि जीवितो वा मृतोऽथवा इति मातृवच श्रुत्वा नवराजोति धार्मिकः अम्बा माश्वासयामास हेतुभिः शास्त्रबोधितैः। नवराज उवाच पितृदेशे गमिष्यामि तवानुज्ञां विधाय च पुत्रस्य परमो धर्म पितृसेवा परो न हि
जीवितो वाक्यकरणात् क्षया हे भूरि भोजनात् गयायं पिण्डदानात् त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता एवं प्रबोध्य जननीम् अनुज्ञां प्राप्य सद्विजः प्रबोध्य युवतीं भार्यं पाथेयं परिगृह्य च यात्रां तु विधिना कृत्वा ततो देशान्तरं गत ग्रामान्तरं गच्छतात् अन्वेषयन् द्विजः शुश्रावस ग्राम्यमुखाद् निश्चितं पितरं मृतं रुरोदातीव दुःखार्तो हातात् जनकेति वै गङ्गातीरं ततो गत्वा चक्रे श्राद्धं विधानतः अथ स्नुषा गोमयाया दुःखात् पितृगृहं गता तदा स गोमयोद्भूता ग्रामं तत् त्यज्य लज्जया वस्त्रहीनातिमीलिना नदी निकटवासिनी एरण्डपादपाकीर्णे तृणकुण्ट्यन्तरे स्थिता कोद्रवान्नं सदा भुक्त्वा सूत्रकर्तनकर्मतः कर्मणा साति दुःखेन साध्वी कालं न्यवर्तयत यदा कैलासशिखरे लक्ष्मीदेवी सरस्वती सर्वदेवगणैर्युक्त चक्रुस्तद्व्रतम् उत्तमं तदा मर्त्योपदेशार्थं स्वाश्रमाद् नारदो मुनि आगतस्ताभिराप्यप्तो गच्छ लोकहिताय वै एतदद्य मर्त्यलोके सञ्चारी स्यात् तथा कुरु इत्याज्ञां स मुनिः प्राप्तो गतवान् मर्त्यविष्टपं पृथ्वीमण्डलमध्यस्थ तदरिद्र को भवेदिति चिन्तयामास तत्त्वज्ञ परोपकरणप्रिय गोपालं परिपपच्छ को दरिद्र क ईश्वरः गोपालस्तु ततो वाक्यम् उवाच प्रान्तरे स्थित दुःखी नीनां न काप्यस्ति गोमयाया पराभुवि गोपालवचनं श्रुत्वा गतस्तद् सन्निधौ मुनि ब्राह्मणे माह्वयामास द्वारि स्थित्वा पुनः पुनः धर्मोपदेश शृण्वन्ति स्वस्थानि व्रतम् उत्तमं यथा विधानं वक्ष्यामि गोमये तद् व्रतं कुरु इत्युक्ता नारदो धीमान् उवाच सकलं विधिं ततसा नन्दसंयुक्ता प्रणम्य मुनिषत्तमा तस्मै पीठासनं दत्त्वा संवेश्य च गृहान्तरम् आतिथ्य तस्य वै कर्तुं मनसा परिचिन्त्य सा गृहे च नास्ति मे किञ्चिद् किं करोमीति दुःखिता कर्तितं सूत्रम् आदाय ताम्बूलार्थं जगाद ताम्बूलं पूलसहितं गृहीत्वा गृहमागता तावदेव गृहे तस्या विधिं त्यक्त्वा गतो मुनिः ब्राह्मणी गृहमायात न ददर्श मुनीश्वरं गृहसम्मार्जनं चक्रे विषादेन युतासते भद्रपीठं समुत्थाय तत्र दृष्टो निधिस्तथा व्रतोपदेशमात्रं वै नायं दातु मुनीश्वर धर्मव्याजैर्निधिमपि मह्यं दातु समागता इत्यानन्देव मनसा जग्राह निधिमुत्तमं ततसा तद्व्रतं चक्रे मुनिनाभिहितं यथा उपाष्टकं तु संस्थाप्य पुत्रागमनकाङ्क्षया स्वयं सतं सा बुभुजे शीताक्षी धृतैर्युतं तद्व्रतस्य प्रभावेण रात्रौ तत्पुत्र आगत आशीर्भिर्यर्चयामास सुनुनासौ नमस्कृता पूपाष्टकं च पुत्राय ददौ सा गोमयोद्भवा दत्तं पूपं च बुभुजे शीताक्षीरधृतैर्युतं परस्पर कथां कृत्वा यभाभ्यां गमिता निशा प्रतस्ततः सा जननी नवराजमुवाच गंगातीरं हि गत्वा तं स्नानं कुरु च पुत्रक ततो विश्वेश्वरं देवं ध्यानेन परिचिन्तय इति मातृवच श्रुत्वा कृतगंगा प्लवो द्विज कृत्वा वैश्वेश्वरीं पूजां महास्तोत्रम् उवाच यं वै वेदो वेदनो नैव विष्णुर्यं वा वेदा नरसयो नैव वाणी तं देवेशं मादृशकल्पबुद्धिर् यथार्थत्यादेवेद्यहो विश्वनाथं श्रुत्वा स्तोत्रमिदं तुष्टो जगाद परमेश्वर कालान्तरे च ते राज्यं नवराज भविष्यति इत्युक्ता गोमया सूनुरन्तर्धानं गतः शिव ब्राह्मणोऽपि वरं प्राप्य जगाम स्वनिकेतनम् एतस्मिन्नन्तरे काले लावण्याख्य पुरीश्वर मृतकालवशेनैव राजपुत्रादिवर्जितः तस्मिन् देशे गजेन्द्रेण कश्चित् राजा विधीयते इति श्रुत्वा देशदेशादागता लोकपङ्क्तयः वस्त्रालङ्कार सम्पूर्ण नाना शोभा समन्विता स्थित्वा लावण्यपथ्यास्तु राज्यलोभेन वै नराः गोमया सापि लोभेन स्वपुत्रा स्वगृहाय यो सपुत्रा लज्जया सा वै सन्तस्थौ गृहकोणतः स जलं स्वर्णकुम्भं च गृहीत्वा राजमार्गत तेषु सर्वेषु तिष्ठन्तु गजेन्द्रोन्वेष यन्नरान् गृहकोणगतः सा वै नवराजसमातृकः स्नापितस्तज्जलेनैव स्कन्धस्ते स्थापितस्तदा राजगृहं स नीतश्च दोलया तद् प्रसुरपि पुरोहितादयश्चक्रु सर्वे तस्याभिषेचनं वीणा मृदङ्गं पटः शङ्खं दुन्दुभिनिस्वनैः
हर्ष नृत्यादि संयुक्त गीतै ताल समन्वितैः लाजा पुष्पादि सिन्दूरैर्युक्तं प्राप्य महोत्सवं नवराजोतिवत् हृष्ट सिंहासनगतः प्रभुः ब्राह्मणान् पूजयामास भक्त्या श्रीर्वाद बालकान् अन्यानुत्सव संलग्नान् दत्त्वान्ते पारितोषकान् मातरं परिपक्ष प्रिया मे क्व गतेति वै स्वस्थानिशा न जानन्ति सर्वदुःखविनाशिनीं तत् प्रसादेन भूपोऽहं जातो वै तद् प्रभावता महद्दुःखं त्वया प्राप्तम् इत्युक्त्वा मातरं प्रति प्रियायै प्रेषयद् दोलां गतास्तस्याज्ञया जना ददृशुस्तां श्रियं ते वै नदीतीरनिवासिनीं ततो पृच्छति कां त्वं भो नवराज प्रिया कुत ते पृष्टा सा चारुनेत्रा कथयामास भारिकान् पत्न्यहं नवराजस्य परम प्रीतिदायिनी गोमया पतिमाता च गच्छामि यत्र मत्प्रभु तस्या तद्वचनं श्रुत्वा भटास्ते हर्षसंयुक्ता दोलायां स्थापयित्वा तां प्रेषयामासुरादृता तैर्भार वाहकै सर्वे दोलानीता नदीतटे अप्सरोभिः कृतं तत्र ददृशुस्तै व्रतोत्तमम् तदृष्ट्वा भारिका सर्वे तामाश्वास्य गतास्ततः यत्राप्सरोगणैः सर्वे स्वस्थनिव्रतमादृतं भारिका ऊचुः भो भो देव्य किमे तद्वै क्रियते व्रतमुत्तमम् अप्सरस ऊचुः स्वस्थानि व्रतमेतद्धि सर्वकामफलप्रदम् एतद्व्रतप्रभावेण स्वर्गलोके महीयते इति श्रुत्वा भारिकास्ते पुष्पादीनि प्रयाच्य वै अप्सरोभिः शैवात्र स्वस्थान्याश्च क्रीरे व्रतम् पुनस्तत्र समायाता यत्र सा भोगिनी स्थिता ततोतीव प्रक्रुद्धासीद् विलम्बेन च सा प्रिये सपूप तिलकान् दृष्ट्वा भारवाहनाद मुदान्वितान् स्वपुष्पफलहस्ताब्जा नाह तान् पापिनी वधुः भारवाह विलम्बो हि युष्माभिः क्रियते कुतः इति श्रुत्वा भारवाह विज्ञप्तिं चक्रिरे मुदा अप्सरोभिः कृतं चैव नानाकामप्रदं शुभम् स्वस्थान्य च व्रतं दृष्ट्वा न श्रद्धा समजायत फलाभिलाभिश्चैव यस्माभिः अपि तत्कृतं भवर्थं पुष्पफलं समानीतं गृहाणभो एतत् श्रुत्वा वाक्यं क्रुद्धाति वा वद तदा स्वस्थानि कामया यद्यापि लोके वेदे न च श्रुता इति वज्रसमं वाक्यम् उक्त्वा सा पापिनी तदा तद्धस्तपुष्पफलयो चक्रे सा क्षेपणं रुषा तस्यास्तत्कर्म दोलायं दृष्ट्वा संस्थाप्य पापिनीं निन्युर्मार्गेण त्वरया भारवाह भयान्विता अथ तत्र समायाताल्पजला सुगमा नदी तेतां हि पापिनी निन्युर्नदी तर्तुं यदा प्रिये तदा प्रलवयद् मेघा गर्जनं चक्रिरे प्रदा पपात वातवेगेन नीतो नद्यं तु पापिनी सा दृष्ट्वा पापिनी जाता गलत्कुष्ठेन संयुता तद्व्रतस्य प्रभावेण वाहकास्ते दिवं गता तत्पापिनी स्पर्शभीत्या जलं पातालमाश्रितं सकटं कर्दमं तत्र दृश्यते पथिकै सदा तत्र 12 वर्षाणि कर्दमे पापिनी स्थिता ततो वंशादिभिस्तद्भिः शोधितं कर्दमं जनैः तदा वंशाग्र संलग्ना प्लुप्त पापिनी गता कुशस्थाने च पतिना सङ्कटैर्देवयोग्यतः सर्वदा सा ज्वलद वह्नि ज्वालया परिपीडिता ततः स नवराजो हि मातरं प्रति चोक्तवान् राज्यं लक्ष्मीं च सम्प्राप्ता मातु तव प्रसादतः सर्वदानं करिष्येऽहं ब्राह्मणेभ्यश्च श्रद्धया इत्युक्ता देशदेशाश्च ब्राह्मणाः सन्निमन्त्रिता कपिलशिष्यसंयुक्ता तमुद्दिश्य जगामस तेनासो तन्नदीतीरे सा दृष्टा पापिनी तदा मुनिना परिपृष्टा सा दग्धकाष्ठा कृतिर्वधु किं कुलं केन पापेन चेदृश्यते दशाधुना मुनेस्तद्वदनं श्रुत्वा पापिनी वाक्यम् अब्रवीत् जात्याहं ब्राह्मणी विप्र अवस्था व्रतनिन्दया क्षुधा मां बाधते द्विद्वन् भुक्तशेषमिहा नयतेनैव मे क्षुधा शान्ते इत्येवं प्रार्थयाम्यहम् ओमित्युक्त्वा गतो विप्रो नवराजनिवेशनं तत्र भुक्त्वा महद्भोज्यं दानानि प्राप्य वै ततः सर्वे द्विजागता गेहनस्नानान्येव मुदान्विता मुनिना याचितुं नैव शक्यते लज्जया तदा ततो भ्रमन् विप्रो नवराज नृपाङ्गणे मात्रा नृपस्य दृष्टस् ततो जिज्ञासितो द्विज नृपमात्रा मुनिः पुष्टो किं कार्यं भवतस्त्विह तेन चोक्तं परार्थं च याच्यते भोज्यमात्रकं भण्डारीका इति श्रुत्वा दातुं भाण्डगृहं ययो पक्वान्नादि प्रपूर्णं तद् व्रतनिन्दा प्रभावत रिक्तं भाण्डादिकं जातं सर्वे दृष्टा हि तत्सत्रपा नृपमात्रे परावृत्य ते वदन् सर्वमेव हि शोभा च
तद्वच श्रुत्वा दीयतां भोज्यमात्रकं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कृतवन्तस्तथैव हि कृतने मृण्मये भाण्डे कृत्वा भोज्यं त्वरान्विता मुनिर्गतश्च पापेन युक्ता सा तत्र तिष्ठति दत्त्वा तदोदनं तस्य द्विजस्तु स्वगृहं ययो कस्मिंश्चित् दिवसे तत्र तस्य भाग्योदयेन च आगस्य तु जगन्माता गरुडो परिशंसिता यदाह वैष्णवी देवी तद्शृणुष्व वरानने वैष्णव्युवाच स्वस्थानि परमेश्वर्या विधिवत् व्रतमाचर तेन स्वस्थान लाभस्ते भविष्यति न संशयः इत्युक्तान्तर्हिता देवी वैष्णवी कामरूपिणी तया कृतं व्रतं सर्वं यथा देव्या प्रवासितं दधिपूपे तया देव्या यप्राप्ते व्रतकर्मणि शर्करायस्तदा पूपं नदीपकं सवै नदीपङ्कस्य वै दधि कृत्वा समर्पितं बध्वा तद्वयं सत्यतागतम् अष्टपूपं ससूत्रादि नमस्कृत्य पुनः पुनः नद्यं सिप्त्वं तथा शीघ्रं तत्पर्शं प्राप्य नागिने अष्टोत्तरशतं वर्षं पुरुषेण विवर्जिता नागेन मिलिता या च तत्पूपस्पर्शनादिभिः सर्वपापैर्विनिर्युक्ता बभूवातीव सुन्दरी आशीषं च ददौ तस्यै नागकन्याति विस्मिता ततो बभूव सा पापा महालक्ष्मीस्वरूपिणी केनाप्यागत्य राज्ञेथ कथिता सुन्दरी कथा पथिकस्य वचः श्रुत्वा नूचरा प्रेषिता पुनः नानावाद्यादिघोषेण वेदघोषेण वै ततः स्वीये गृहे समायाता नवराजस्य भोगिनी गोमयाया पदद्वन्द्वं सुन्दरी प्रणनामसा मात्रा पत्न्या समायुक्तो नवराजो नराधिप प्राप्तं निष्कण्टकं राज्यं बुभुजे सर्वसम्मतं स्वस्थानि परमेश्वर्या कथां श्रुत्वा च श्रद्धया अपुत्रा पुत्रमाप्नोति पत्युः प्रीति च विन्दति कथाश्रवणमात्रेण हयमेधफलं लभेत अपुत्रा पुत्रमाप्नोति पत्युः प्रीति च विन्दति कथाश्रवणमात्रेण हयमेधफलं लभेत। जय जय श्री स्कंद महापुराणे माघमात्म्ये श्री स्वस्थानि व्रतकथा मूलपाठः श्री सामदास शिवार्पणमस्तु। कृपया पुष्प अर्पण गरिदिनु हुनेछ र मूलपाठ पूर्ण भएको छ। अब मूलपाठ पूर्ण भएसँगै अब हामी यसका कथाहरूलाई पनि श्रवण गर्नेछौँ। कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ। सम्पूर्ण कथालाई पनि म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्नेछु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, अवश्य यसलाई सुन्नुहुनेछ। श्रवणको फल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, महिमा अत्यन्तै उच्च रहेको छ। विशेष गरेर यो हिमवत खण्डमा त अत्यन्तै ठुलो महिमा यसको रहेको छ। त्यसो भएर यहाँहरूले अवश्य पनि छुटाउनु हुने छैन, सम्पूर्ण श्रवण गर्नुहुनेछ। यो निवेदनको साथमा अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। फेरि त्यो कथालाई लिएर म उपस्थित हुनेछु। कथाको साथमा अब हामी अगाडिका अध्यायहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। कथा अवश्यमै यो श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नुहुनेछ, वन्दन गर्नुहुनेछ। जबसम्म समाप्ति हुँदैन व्रत तबसम्म निरन्तर रहनेछ। यो जानकारीको साथमा यतिन्जेल हेरिदिनु भयो यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। अस्तु।